Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to English with Ikram. Today's video is for headmaster, SDEO, STO and subject specialist preparation. Because today I'm going to discuss some MCQs from pedagogy. You know, pedagogy is a bit difficult and very important for subject specialists as well as for headmaster, headmistress, STO and STO test. You know that I've been working for the preparation of lectureship and subject specialists, and I've been uploading videos based on MCQs from language and literature, vocabulary and English grammar. So today I will discuss almost 20 MCQs, very important MCQs from pedagogy. जो pedagogy का पोर्शन है ये थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा बोरिंग है आप कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर हेडमास्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स STO एंड STO टेस्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट होती हैं, और इसके साथ साथ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की पोस्ट के लिए भी पेडागोजी से MCQs आते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. MCQ नंबर 1. मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ टीचर इज the most important work of teacher is to organize teaching work, to evaluate the students, to deliver lecture in class, or to take care of children. So that's very important, that the most important work of a teacher is option A, to organize teaching work. That's the most important thing that a teacher is supposed to do, right? Number 2, the word pedagogy means, what is the meaning of the word pedagogy? To understand the child, to guide the child, to lead the child, or to educate the child. Keep this thing in mind, and you know that whenever I discuss the things, whenever you watch this video, these things remain in your brain for the longest time. Normally it happens that when you listen to somebody else, जब आप किसी को सुनते हैं, डिस्कशंस करते हैं, वो वीडियो देखते हैं इस तरह की, तो ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक रहते हैं एज़ कम्पेयर टू द थिंग दैट यू स्टडी योरसेल्फ. ये बात बार बार कहता हूँ, वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें. एटलीस्ट जो आज के इंपॉर्टेंट MCQs हैं, जो मैं समझता हूँ कि दीज MCQs आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्राम योर टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये 20 के 25 MCQs ये आपके दिमाग में नक्श हो जाएंगे. एंड व्हेन यू विल सिट फॉर योर एग्ज़ाम, आप एग्ज़ाम टेस्ट के लिए बैठेंगे, अगर इनमें से इंशाल्लाह कोई MCQs आते हैं तो आपको फ़ौरन क्लिक करेगा कि दैट आई वॉच्ड द वीडियो ऑफ सर इकराम एंड दिस MCQs वाज देयर डिस्कस्ड बाय हिम. Number 2, the word pedagogy means to understand the child, to guide the child, to lead the child, or to educate the child. The right option is the word pedagogy means to lead the child. Number 3, the philosopher who for the first time mentioned the importance of play, sports in education was, game is very important, the healthy mind lies in the healthy body. So that's why sports is very much important. So the first philosopher who mentioned the importance of sports in education, he was Socrates, Plato, Aristotle, or John Locke. And that philosopher was, the name of that philosopher was Aristotle, who mentioned the importance of sport for education. Next, the idea of practical learning means education should apply to the idea of practical learning means education should apply to the practice, society, abstract knowledge, real world. The right option is option D, real world. The idea of practical learning means education should apply to the real world. That's the real education that can be applied to the real world. Progressivism believes that education comes from the experience of the day. Progressivism believes that education comes from the experience of the child, teacher, principal, or society. And the right option is option A, child. Progressivism believes that education comes from the experience of the child. When the child experiences himself or herself, he learns. That's the practical experience, and that's the real education. Next, progressivism believes that children learn in a dish, closed environment, competition, isolation, or community. So that is the theory of progressivism. It believes that children learn in a
community. Option D is the right option. The children learn in not in closed environment, or in competition or isolation. They learn in a community. Next, the curriculum of educational institution should be based on theory, practice, theory and practice, theory, practice and research. And the right option is that the curriculum of educational institutes should be based on theory and practice. The branch of philosophy focuses on the nature of reality is, the branch of philosophy focuses on the nature of reality is connectionism, epistemology, metaphysics, pedagogy. And the right option is option C, metaphysics. The branch of philosophy focuses on the nature of reality is metaphysics. Next, in education, dash is used to make inference about the learning and development of students. Assessment, evaluation, measurement or diagnosis. In education, option A, assessment is used to make inference about the learning and development of students. Assessment is very important in teaching and learning process. Educational psychology concerned with the scientific study of education, philosophy of education, human learning, teaching methods. Educational psychology is concerned with the scientific study of human learning. The right option is human learning. Educational psychology is concerned with the scientific study of human learning. Progressive education emphasizes learning by reading, writing, doing or enjoying. Again the same thing, practical experience. The real education is based on practical experience by the child. So here progressive education emphasizes learning by doing. Let him do something, he will learn, and that's the real learning. According to John Dewey, which side of the educational process is the basis? John Dewey, an educationist, a philosopher. According to John Dewey, which side of the educational process is the basis? Economical, sociological, philosophical or psychological? And the basis is option D, psychological. According to John Dewey, psychological process, educational process is the basis. Next, the role of a teacher in inquiry-based learning is of inquiry-based learning है, उसमें टीचर का रोल क्या होता है? Either an instructor, facilitator, delegator or formal authority. Here in inquiry-based learning, the role of a teacher is of facilitator. He acts as a facilitator. He facilitates the students in inquiry-based learning. Dialectic method of inquiry was contributed by Socrates, Plato, Aristotle or John Dewey. Dialectic method of inquiry was contributed by option A, Socrates, जिसे हम सोक्रात कहते हैं. The psychomotor domain involves learning, knowledge, manner or physical movement. Psychomotor domain involves physical movement. The right option is option D. The psychomotor domain involves physical movement. Which act of a teacher foster a sense of autonomy in the learning process? In the learning process, which act of a teacher foster a sense of autonomy? The child feels himself autonomy, a sense of autonomy. वो थोड़ा सा उसको आज़ादी का, थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, खुद मुख्तारी का एहसास होता है, ऑटोनॉमी फील करता है, सेंस होता है. तो इसमें कौन सा एक्ट ऑफ टीचर है? Either instructor, facilitator, delegator or formal authority. The right option is when a teacher acts as a delegator, the students feel a sense of autonomy. They feel a sense of power, that we are having a power. Delegate कहते हैं ना, to give power to somebody else. अपनी powers को delegate करना किसी दूसरे को. जब teacher बच्चों को अपनी powers delegate करते हैं, उन्हें बोलने का sense of feel, expression का, उन्हें कुछ करने का की आज़ादी देता है, तो वो autonomy feel करते हैं. तो वो
बहुत ज़्यादा इससे सीखते भी हैं, वो खुद एक्सपीरियंस करते हैं। अगेन वही चीज़ है कि इस तरह के एक्सपीरियंसेस से उनमें जो सीखने की जो एक सलाहियत है, उनकी जो कैपेबिलिटी है, वो भी शार्पन है, वो भी तेज़ हो जाती है। तो एंड दे फील अ सेंस ऑफ ऑटोनॉमी। Next, a teacher is considered successful only if he understands his subjects well, gets his article published in popular magazine, gives 100% examination result, or is gentle and easily approachable. That's very important. A teacher is considered successful only if he, option D, the right option, when he is gentle and easily approachable. When he is soft-hearted, when he is gentle, when he is kind-hearted, when he speaks softly, when he speaks politely, and when the students feel ease, comfortable to approach him. जब वो आसानी से उस टीचर को अप्रोच कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, तो टीचर इज़ कंसिडर्ड सक्सेसफुल। ये नहीं कि उसकी सब्जेक्ट पे बड़ी कमांड है और वो रिज़ल्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है, बच्चों को रट्टे शाही मरवाता है। No, this is not the quality of a successful teacher. Rather, the quality of a successful teacher is that he is a very gentle person, he speaks politely, और वो एक रैपो बिल्डिंग होती है बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ, एक अच्छी एफिनिटी डेवलप हो जाती है बच्चों के साथ, और आसानी के साथ बच्चे उसको उनको अप्रोच कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं, कंफर्ट फील करते हैं उनसे बात करते हुए, अपने इशू शेयर करते हुए। नेक्स्ट, women are given preferences in teaching of primary children. Why? It's a theory, it's an ideology that women are the best teacher, especially at primary level. और आहिस्ता आहिस्ता शायद गवर्नमेंट भी इस बारे में सोच रही है कि प्राइमरी लेवल पे ओनली फीमेल टीचर्स को, विमेन को सिर्फ जो है अपॉइंट किया जाए। इस बारे में बात हो रही है और आइंदा हो सकता है आने वाला दिनों में, आइंदा किसी टाइम में इसको इम्प्लीमेंट भी किया जाए। तो वजह क्या है कि शी इज़ इमोशनली अंडरस्टैंडिंग, शी कैन आल्सो क्राई, स्टूडेंट्स डोंट गेट स्केयर्ड, और men don't like this profession. So obviously the reason is that she is emotionally understanding, that they are mothers, they can understand the feelings of the children in a more better way as compared to men. मर्दों की निस्बत तो बच्चों की फीलिंग्स को, उनके एहसास को अच्छी तरह समझ सकती हैं प्राइमरी लेवल पे, स्पेशली छोटे बच्चों को, एज कम्पेयर टू मेल टीचर। दैट्स व्हाई दे आर गिवन प्रेफरेंसेस। नेक्स्ट, डिस्कवरी टीचिंग इज एक्चुअली a dish, positive approach, dialectal approach, constructivist approach, or destructive approach. Discovery teaching is actually a constructive approach. Discovery teaching, when your teaching is based on discovery, innovations, नई नई चीज़ें क्रिएट की जाती हैं, नई नई चीज़ें इनोवेशंस की जाती हैं, तो इस तरह की जो टीचिंग है that is based on constructive approach. The last MCQ of the day: as people grow older, the dish of the learning declines. That's a fact, very important fact. When you grow older, your speed, power, quality, or quantity of learning declines. So that is the speed of learning decline. जब आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, तो आपके अंदर जो लर्निंग की जो सलाहियत है वो उसका डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। छोटे बच्चे बड़े शार्प पिकर होते हैं, हम ये समझते हैं बच्चे नहीं, ये नहीं समझ सकते, तो बच्चे बड़े तेज़ी के साथ बड़े वो फास्ट लर्नर होते हैं, बड़े फास्ट पिकर होते हैं। तो आप अंडर एस्टिमेट ना किया करें, बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। अगर आप उन्हें अगर कोई मसला है, बच्चे नहीं सीख सकते, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद योर स्ट्रैटेजी, योर मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग। ज़रूरत है कि आप अपनी मेथडोलॉजी पे गौर करें, अपनी स्ट्रैटेजी पे गौर करें, उसे देखें, उसमें कोई मसला हो सकता है और वहाँ पे आपको थोड़े से सीखने की ज़रूरत है, बच्चे सीखते हैं। तो दीज वर 20 very important MCQs from pedagogy, and such MCQs are given there in your SDEO, STO or Headmaster Administrators, and in your subject specialist tests. Keep on watching my videos for quality and systematic preparation. I select these MCQs for Headmaster, Administrators and Subject Specialists, Lectureship, STO, different posts को टेस्ट होते हैं। I select MCQs from different sources. अगर आपको पता है कि ये MCQs कहाँ से हैं तो it doesn't matter। बाद में स्टूडेंट कहते हैं कि ये फलां से लिए हैं, तो जाहिर सी बात है MCQs में कहीं से
पिक करता हूँ। आई हैव मैनी बुक्स, अगर मेरा कैमरा आपको मैं दिखा सकूँ कि मेरी टेबल पे इस वक्त कितनी बुक्स पड़ी हुई हैं, तो मेरा कैमरा इस वक्त फिक्स्ड है ट्राईपोड के अंदर। मेरे साथ कोई दूसरा बंदा नहीं है जो मेरी वीडियो बना रहा है, तो अगर आपको दिखा सकता तो मैं दिखाऊंगा आपको कि बुक्स कितनी पड़ी हुई। तो डिफरेंट बुक्स है, नेट से, मुख्तलिफ ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे MCQs, तो एक्चुअल थिंग है टू डिस्कस MCQs, इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ से भी मैं लेता हूँ, इट डजंट मैटर। तो मुझे जो इंपॉर्टेंट लगते हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, आई डिस्कस दोज MCQs, वेदर द MCQs आर फ्रॉम लिटरेचर, फ्रॉम लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, फ्रॉम वोकैबुलरी, फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर। एक्चुअल थिंग इज़ योर कॉन्सेप्ट। जहाँ पे कॉन्सेप्ट होते हैं वहाँ मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश ग्रामर में एवरी थिंग हैज़ बीन डिस्कस्ड, सब कुछ मैंने डिस्कस किया हुआ है। फोनेटिक्स फोनोलॉजी को मुकम्मल मैंने डिस्कस किया हुआ है। अब MCQ जहाँ से मर्जी हो, जिस बुक से मर्जी हो, जिस सोर्स से मर्जी हो, द थिंग इज़ प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद वी हैव टू जस्ट प्रैक्टिस विद द हेल्प ऑफ MCQs। जितने ज़्यादा MCQ डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, आप अपना असेसमेंट होगी, आपकी वैल्यूएशन होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्या है। तो पेडागोजी में ज़्यादातर चीज़ें प्रैक्टिस ही है आपकी। पेडागोजी में और लिटरेचर में, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर है तो वहाँ प्रैक्टिस ही करनी है हमने। वहाँ मतलब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं आपको पहले कोई चीज़ सिखाऊँ। वहाँ जस्ट वी कैन डिस्कस द थिंग्स, the important MCQ that I select from different sources, and then I bring those MCQs in front of you for your practice. Keep on watching my videos for your preparation and share with friends. And if you are new on my channel, subscribe it right now. That's all for today. Thank you very much.